everyone, welcome back to our channel, and today we will learn about the basic grammar rules of English. So let's begin. First of all, there are many grammar rules in English, but the basic rules refer to the sentence structure and parts of speech. And इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. सो शुरुआत करते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर से. सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने से पहले वी मस्ट नो व्हाट इज अ सेंटेंस. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस फर्स्ट. A sentence is a group of words which expresses and consist of a subject and a predicate. हिंदी में अगर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो एक सेंटेंस समूह है शब्दों का जो कि एक्सप्रेस करता है कि क्या काम हो रहा है, और इसमें होता है एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट. बेसिकली प्रेडिकेट कॉम्बिनेशन होता है ऑब्जेक्ट का एंड वर्ब का. हर सेंटेंस शुरू होता है एक कैपिटल लेटर से और एंड होता है पंक्चुएशन मार्क्स. Let's have a look on the example of sentence. So here subject is the salesman and predicate is sold 100 ties. So when we combine subject and predicate, we will get the sentence that is the salesman sold 100 ties. Sentence structure को अच्छे से समझने के लिए we must understand what is a subject and what is a predicate. So let's have a look on the subject first. So what is subject? The person, animal or thing in a sentence which performs an action or has an action done to it. अगर हम हिंदी में बात करते हैं तो कोई भी व्यक्ति या वस्तु जो कुछ काम करता है या काम से रिलेटेड है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, एंड सब्जेक्ट को हिंदी में कर्ता कहा जाता है. Let's have a look on the examples of subject. Like first example is John takes the bus every day, and second example is food is eaten every day. So here John and food are the subject. And next is predicate. So the predicate is the part of a sentence that contains a verb and gives information about the subject. इसमें verb होगा और ये information दे रहा है या बता रहा है about the subject कि subject क्या कर रहा है. Let's have a look on example, that is Jack walks to work, and in the sentence Jack is the subject and walks to work is the predicate. And next is object. So the person or the thing which get affected by the action of the subject means कर्ता के कार्य से जो चीज़ प्रभावित हो रही है, that is कारक, and कारक is object and कर्ता is subject in Hindi. So example is the monkey ate a banana, and banana is object here. Now let's have a look on the second basic rule of English grammar, that is parts of speech. So basically there are 8 parts of speech in English language, and the part of speech indicates how the word functions in meaning as well as grammatically within the sentence. So word का meaning और grammatically वो किस तरह से work कर रहा है एक sentence में, ये दोनों ही part of speech जो है indicate करते हैं. So an individual word can function as more than one part of speech when used in different circumstances. So let's begin with the first part of speech, that is noun. So noun क्या है? जो शब्द किसी भी person, place, animal, thing, quality, activity, idea या feeling को नाम देने के लिए use किया जाता है, that is noun. Noun can be singular or plural, and let's have a look for the example of the noun, that is Tom, people and books. And second part of speech is pronoun. Pronoun is a word that replaces a noun. जो शब्द noun को replace करते हैं repetition को avoid करने के लिए उन्हें pronoun कहते हैं. For example I, you, him, us, they, ये सब pronoun हैं. Third part of speech is verb. अब verb क्या है? Verb is a word जो use किया जाता है किसी भी action, state या occurrence को describe करने के लिए, such as walk, happen, like, all these are example of verb. And the fourth part of speech is adjective.
एडजेक्टिव क्या करता है, ये डिस्क्राइब करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा, या फिर ज़्यादा इंफॉर्मेशन देगा, एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा किसी नाउन या प्रोनाउन के बारे में. Fifth part of speech is adverb, and an adverb will modify a verb and tell us how often, where or in what manner we do something. So adverb basically modify करता है verb को. Example के देखें अगर हम adverb का, that is quickly, carefully. So the next part of speech is preposition. A preposition is a word that links a noun, pronoun or noun phrase to some other part of a sentence. जो भी word किसी noun, pronoun या noun के phrase को link करता है sentence के बाकी parts के साथ, उन्हें preposition कहते हैं. Example of preposition are it, in, from, etc. Next part of speech is conjunction. Conjunction are words used to connect other words, phrases or clauses. So जो words use किए जाते हैं words, phrases या clauses को combine करने के लिए, connect करने के लिए, उन्हें conjunction कहते हैं. Example of conjunction are but, and, or, so, etc. And the last is interjection. So interjection is an exclamation used to express an emotional reaction. किसी भी भावना को व्यक्त करने के लिए जो वर्ड यूज़ किए जाते हैं, दे आर इंटरजेक्शन. फॉर एग्जाम्पल, हे, ओ, हुर्रे. Thank you everyone for watching. In our upcoming videos, we will discuss all the English grammar rules in detail, so stay tuned for more videos.